ओके, उज्जैनी किसके लिए जाना जाता था? वाटर रूट, लैंड रूट? तक्षशिला, water. Pohar is the coastal area. Is it clear? We did this at the last. Now, when we talk about urban population, अब क्या था, ये क्वेश्चन आ चुका है जो मैंने अभी नहीं पोस्ट किया बिकॉज आर्ट एंड कल्चर से है। क्या क्या होता था इस बार जो पेपर में आया था, कौन सा इसमें से पॉटरी का व्हीकल नहीं, पॉटरी नहीं है, इसको बोलते हैं NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, probably used by rich people, ornaments, tools, weapons, vessels, figurines made of wide range of materials, gold, silver, copper, and this. आपसे ये पूछा जाएगा ड्यूरिंग द 6th century BCE to this क्या क्या अवेलेबल थे रिसोर्सेस, क्या थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, probably used by rich people, ornamental tools, weapons, vessels, figurines. Figurines किसके बने हुए थे? Gold, silver, copper, bronze, ivory, glass, shell and terracotta. Clear everybody? Question में लिख लो इसके सामने, what is the question for it? What were the materials available during this time? Clear or not? Highlighter इसका चेंज कर दो, इसका चेंज कर दो। हाँ ओके, ग्रीन कौन सा? तो येलो ही तो कर रहा था, ये तो येलो ही तो कर रहा था। ग्रीन यहाँ दिख रहे? able to see it? Okay. Is it clear everybody? क्या क्या अवेलेबल है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिख लो, what were things that were available? Any doubts with this or not? Next, by the 2nd century, we shall what have inscriptions in a number of cities. These mention the name of the donor. अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी भी होता है. How many of you been to Golden Temple or any such religious places? Anybody has to be into religious places? अब क्या होता है, जैसे कोई स्टैचू होता है ना, लेट मी जस्ट शो इट टू यू। अगर इसमें इंस्क्रिप्शन, ये देखो, ये स्टैचू है ना, इसके नीचे आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि सो एंड सो पर्सन हैज गिवन मनी। इज इट क्लियर और नॉट? वही चीज उस टाइम पे भी होती थी, इट यूज्ड टू बी रिटन। सो लाइक से फॉर एग्जांपल ग्रुप इकट्ठा होके पैसे दे देता किसी मंदिर को, वो चीज यहाँ पे लिखी जाती थी। इज दैट क्लियर और नॉट? दिस वाज समथिंग दैट वाज रिटन हियर। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर? क्लियर? हाँ जी, क्या हुआ? फोटो नहीं है, स्टैचू है भाई, स्टैचू है, फोटो कहाँ पे है? ये स्टैचू है। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट वन, the mentions the name of the donor sometimes specify her occupation as well as tell us about the people who lived in the towns: washing folk, weavers, scribes, carpenters, potters, goldsmiths, blacksmiths, official, religious teachers, merchants, and kings. Sometimes guilds or shrenis. What are guilds or shrenis? These are group of people who work together. Guilds क्या है? श्रेणी क्या है? Suppose सारे copper workers हैं, उनको बोल दिया copper श्रेणी, copper guilds. Organization of craft producers and merchants, as mentioned, as well as these guilds probably procured raw material, regulated production, and market the finished product. इसका मतलब क्या है? What does this mean, everybody? What does this mean? Sorry? Manufacturing सारी जो थी, it was controlled by whom? Guilds. Is it clear? That was controlled by guilds. Any doubts with this or not? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग थी, कौन कंट्रोल कर रहा था? Guilds. Next, trade in subcontinent and beyond. From the 6th century BCE, trade was available. 6th century onwards trade था। हमें पता है किस टाइम पे भी ट्रेड था, इससे पहले भी था। किस टाइम पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? व्हाट कैन वी से टू कोरबोरेट देयर वाज ट्रेड? कॉपर। कहां से कॉपर आया था? ओमान। अनदर नेम ऑफ ओमान, मगध। इज इट क्लियर? सिमिलरली
इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो आपके वो होते थे, what do you call it, pots that were inside, they were lubricated in such a way that the fluid does not pass away. So that was the case. Laminated pots. So we saw there was a constant exchange. Similarly, 6th century BC, maybe there was trade available. And now the question comes, what was the trade? It was between Southeast Asia, China, Arabian Sea to East, North Africa, and West Asia. Those who traversed the routes, including peddlers. Peddlers means on foot, and merchants who traveled with caravan or bullocks and pack of animals. तीन टाइप के लोग थे, एक तो फुट मर्चेंट्स, थर्ड मर्चेंट्स जो एनिमल्स के साथ, थर्ड कौन से होंगे? सीफेयरर्स. What were the third ones? Seafarers, which is the strongest naval empire ever during the medieval era. More like that, Cholas. They were very strong. Marathas actually became strong, but no, we were started with the Cholas and all. Is it clear? So we started with that. Now what we are talking about is there are three types of traders. Simple सी बात है. एक तो है आदमी जो फुट पे जा रहा है, एक है जो 5-6 लोगों को अपने साथ लेके जा रहा है एनिमल्स के साथ, एक कौन से होंगे? Seafarers. What was seafarers known as? Mastapatans. That's important. Is it clear? Okay, Abhinandan. Who were Villelas? 3 people I did. There were 3 people in villages. This is according to Tamil language. Villelas. Gahapatis में लिखा हुआ है. और भी बता. हाँ बताओ आप. Holding. What are Villelas? Rich people. Adamis कौन से थे? Poor servants. Is it clear or not? What are Gahapatis? जिनके पास खुद का लैंड हो या फिर रिच लैंडलॉर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? गाहापतीस. यहां तक क्लियर है कि नहीं? Cholas are a kingdom which we have to do. अभी तो किया ही नहीं है. When I say navally, Cholas were very strong. They were generally strongest. जो आपका, see, we have a lot of, okay, where are Keralites maximum based in? Middle East. ये start हुआ during the ancient era. But उससे पहले जितने भी Tamilians थे, you find them in Southeast Asia, Indonesia, you find them in Singapore, because they were continuously moving around. Cholas had this hold. Is it clear or not? Okay. Is it clear? What is Mastuvan in Tamil is given to merchants or seafarers. Sethis तो अभी भी होते हैं. Nagar Sethis medieval history में भी थे, अभी भी होते हैं. Satvans in Prakrit language. Merchants को ये नाम बोला गया. Clear है कि नहीं? Everybody clear with this or not? Next. A wide range of goods were carried from one place to another. Salt, grain, cloth, metal ores and finished products. क्या क्या इंडिया से जाता था वो इंपॉर्टेंट है. रोमन एम्पायर को इंडिया से 3 चीजें चाहिए थी. सबसे पहले क्या चाहिए? स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स, मेडिसिनल प्लांट्स. ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट थी रोमन एम्पायर के. सो इंडिया उस टाइम पे भी क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स. कौन से एक्सपोर्ट्स करता था? टेक्सटाइल्स, मेडिसिनल प्लांट्स और आपके स्पाइसेस. सो दीज ट्रेड्स वर हैपनिंग medieval history में. Is it clear or not? What were the trades happening? Spices, medicinal plants and textiles. Okay, yes. What is Ganda Tindu Jataka? Aman. Ganda Tindu Jataka. Stand up, keep standing. Next. Now that's the way I'll teach. Okay, yes. About not about the rich who disguised himself. Correct. That's the story. What's the name of the story? Ganda Tindu Jataka. Next. Okay. Absent. It's okay. Don't worry. पढ़ा क्यों नहीं? Yes. मेरे को ये बता, मैग्नेथीसिस की बुक का नाम क्या था? सागर की वोटी से सुन ली. महानदी.
यार सागर की वोटी से सुन लेता इंडिका. Is it clear or not? Okay. Yes. Get up. So what? You were okay. You were absent. So what? He was not here. What were you doing in the hostel? Nothing. Okay. Keep standing then. No. Okay. Yeah, because that's gone then. What tomorrow? Then if you're not able to answer, then not only stand, but you'll put finger on your lips while standing. Done. Any question? What I'm doing next? Yes. Can you give me 6 ways in what Magna thesis wrote about the army? No. 6 things about the army. He said it is distributed in such a way. No, हो गया. अब तो standing. अब तो standing. अब तो हो गया standing. अब वो yes. चुप रहे. तुझसे अब पूछो अच्छा वाला. Don't worry. कर ले तू बताना. हाँ बता 6 things. हाँ बताओ आगे. Horses. Foot soldiers, navy, and what? Supplies. Next. नहीं उससे पूछते हैं. उसको आता है सब कुछ. नहीं तेरे को आता है यार. तेरे को आता है. उसको तो क्या तू भी उसको आंसर ही देगा. तेरे को क्या इसमें क्या हो. इसमें क्या हो. ठीक है. गिव मी नेम ऑफ 16 महाजनपद. चल. चल बता. हाँ बता ना. बाजी किसके लिए फेमस है. ये बताते चल. बाजी किसके लिए फेमस है. बाजी का स्पेशली दिया हुआ है. बस खड़े हो जाओ. ये स्टैंड अप. यस. आई एम जस्ट आस्किंग अ सिंपल क्वेश्चन. बाजी इज फेमस फॉर व्हाट. खड़े हो जाओ इधर. डोंट वरी. हाँ बाजी किसके लिए फेमस है. नहीं पता. खड़े हो जाओ यार. डोंट वरी. उसके लिए. टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं है. स्टैंड पीछे जाके बच्चे. खड़े हो जाओ चलो. हो गया. It was basically the rich people owned all the resources. That is what is going on. Okay, back again. I'm gonna keep asking. Don't worry, all of you. So पीछे जाके खड़े हो जा आराम से. क्या. अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूँ बाजी क्या होता है. ओके. व्हाट इज मस्तुवंस सथावनस. इज इट क्लियर और नॉट. 3 टाइप के आपके ट्रेडर्स कौन से थे. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. सिंपल फुट से होंगे या फिर जो एनिमल्स को लेके जाएंगे. सी फेरर्स. सी फेरर्स और मर्चेंट्स को क्या बोलते हैं इन तमिल प्राकृत में. सेठीज का दूसरा नाम क्या हो जाएगा. सतवंश. सेठीज अभी भी कहाँ पे होते थे. मिडिवल हिस्ट्री में अभी भी होंगे और अभी भी हैं. इस सिटी को बनाए सेठीज ने या सेठ्स ने. गुजरात की सिटी है अहमदाबाद. even now the city is known for seats. So it was generally this thing. how many have seen अभी recently एक सीरीज आई है महाराज. सीरीज नहीं मूवी आई है. रियल स्टोरी. हाँ. महाराज लिबेल केस. It wasn't censored. There was a protest against it, but it's a real story. Maharaj Libel case. So that's where the Seths ka role aata hai. That's where it's also given. Is it clear or not? Coins and kings. When we talk, see, the purpose of that is more of it's about a social reformer. So that time, what used to happen, uh, instead of the temple, they used to call it Mahal, Haveli, where the Lord Krishna Vansaj, they used to say, used to stay there. So according to him, Ras Leela would be performed in front of openly everybody. Everybody would have a look into it. So because he was they were blood generations of the god Jagannath. So that's how it started happening. And then the case was filed against it. So that's what it is. Okay. It was the first case recorded it was a case against the Maharajas recorded in the Bombay High Court. That time it was in the Supreme Court. Now we come to coins and kings, something very important. Okay, back to you. Samya,
Where do we see Kushan's statues? पेड़े बहुत अच्छे होते हैं उस जगह के. Not Afghanistan. Just keep quiet. मैंने कुछ बोला? मैंने तेको बोला बोलने के लिए. Okay, you're not able to answer the question. You keep standing. ठीक है. So where is it? Mathura and Afghanistan. Mathura, I said it again. Where did they get their name from? What do they call themselves? Kushans. Sonaparv? Devputra. Devputra. And again, they were very much influenced by Chinese. They were also part of Chinese tribe itself. They were not. Huh? मैंने ये पूछा क्वेश्चंस अपने आप को क्या बोलते थे, क्या बुलवाते थे? देवपुत्र. इज इट क्लियर? कहाँ से कॉपी किया था? चाइनीज से. अब वही चीज यहाँ पे आएगी. टू सम एक्सटेंट जो कल वाला क्वेश्चन था जो तूने गलत किया है, क्वेश्चन ये पूछा गया था नॉट द फर्स्ट टाइम कॉइन्स. फर्स्ट टाइम कॉइन्स इंडिया में कौन लेके आया था? इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉइन्स पहली बार किसने की थी? नॉट द कॉइन्स पहली बार कौन लेके आया. सो देयर इज अ डिफरेंस टू इट. अगर हम बात करें टू सम एक्सटेंट कॉइन्स क्यों चाहिए होते हैं वैसे बाय द वे? So that shows there was exchange. There was no barter system. There was, trading of goods. So our society was very civilized in terms of trading. When we go to medieval century, क्या हो गया? अकबर वगैरह के टाइम पे या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई. उस टाइम पे कॉइन्स कम हो गए. Is it clear or not? But that time when we talk about it, starting 6th century में कॉइन्स थे. कॉइन्स का पर्पस क्या होता है? जितने कॉइन्स होंगे उतना ट्रेडिंग होगा. To some extent, exchanges were facilitated by introduction of coinage. Punch-marked coins, pehla, made of silver and copper, 6th century BC onwards, were amongst the earliest to be minted. And पहले coins कौन से थे? Punch-marked. कौन से धातु के बने हुए? Copper and silver. 6th century से पहले नहीं है. कोई coins recorded नहीं है. Indus में कोई recorded नहीं है. They have been recovered from excavation at a number of sites throughout subcontinent. What is numismatist? It's somebody who has a collection of coins. Have studied and these and other coins to reconstruct. Yes. पहली बार recorded Indian history में थे ये. Attempts made to identify symbols of punch-marked coins with specific ruling dynasties, including the Mauryas, suggest they were issued by kings. दो टाइप के कॉइन्स थे. या तो किंग्स ने इशू किए या फिर मर्चेंट्स ने भी इशू किए. दोनों लोगों ने किए. किसने किए? किंग्स. सेकंड, it was also issued by merchants, bankers and townspeople also issued some coins. The first coins to bear the names of the image of rulers were by Indo-Greeks. पहली बार फोटो वाले कॉइन्स किसके आए? इंडो-ग्रीक्स. इमेज बेस्ड. नेम्स एंड इमेज किसके थे? इंडो-ग्रीक्स. पंचमार्क कॉइन्स थे. कौन से उसके थे? मेटल, कॉपर एंड सिल्वर. 6th century BC. पहली बार नाम किसका छपा? इंडो-ग्रीक्स. Who established control over the northwest part of the subcontinent? 2nd century BC. The first gold coins were issued by Kushans. Yes. क्या हुआ? 2nd century में कॉइन्स आए जिसमें नाम दिया हुआ था. पहले गोल्ड कॉइन्स किसने इशू किए? कुशान्स. हमें 3 चीजें अभी सीखी हैं. सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स सबसे पहले कॉइन्स किसका कौन से थे? पंचमार्क. किसके थे? कॉपर एंड सिल्वर. 6th century BC. मॉडर्न टाइम पे दिखते हैं. पहली बार कॉइन्स पे नाम किसके टाइम पे आया? इंडो ग्रीक्स. तो वो क्वेश्चन तेरा मौर्यंस है. मौर्यंस पहले थे. क्लियर? फिर इंडो ग्रीक्स के टाइम पे आए नाम और फोटोग्राफ. क्लियर और नॉट? तो वो चीज गलत. आराम से वो पढ़ना. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इज इट क्लियर? फिर आया गोल्ड कॉइन्स. गोल्ड कॉइन्स कौन लेके आया? कुशान्स. सबसे बेस्ट गोल्ड कॉइन्स किसके टाइम पे थे? गुप्ता. दैट्स व्हाई गुप्ता इज कॉल्ड golden age. The purity of the coins was best. It was
equivalent to what we saw in Romans. Is it clear or not? ये क्वेश्चन जो आपको लास्ट में आया था. Mauryans आए ना? Ashoka is Mauryan. Is it clear or not? These were virtually identical in weight, those issued by contemporary Roman emperors. किसके? Kushans के, and the Parthenon rules of Iran, and have been found in several sites of North India, Central Asia. The widespread use of gold coins indicates the enormous value of transactions that were taking place. Hoarding of Roman coins, hoarding क्या होता है? Storing, have been found from archaeological sites in South India. That means even South India में trading हो रही थी. Is it clear or not? Simple सा है, जहाँ पे सिक्का होएगा वहां पे वो है. Is it clear or not? Where you find coins, that means trading is happening. Logical सी चीज है. पहले coins कौन लेके आया? पंच मार्क कौन लेके आया? Mauryans. फिर इंडो ग्रीक्स के टाइम पे आया फोटो और नाम. गोल्ड के कौन लेके आए? कुशान्स, which was equivalent to Romans और Persians के. बेस्ट गोल्ड कॉइन्स किसके थे? अगेन Mauryans. गुप्तास के. सबसे अच्छे किसके थे? गुप्तास. The best gold coins were example of Gupta. Similarly, tribal लोग भी करते थे. Best example है Yadu Vedas. Tribes of Punjab and Haryana के कौन से coins थे? They also issued coins. Copper coins, pointing to the latter interest and participation in economic activities. What does coin say? Coins क्या बताते हैं? Trade. ये एक important है. इसमें कोई डाउट किसी को? सिंपल सी बात है. पहला कॉइन कौन ले गया इंडिया में? मौर्यंस. 5 मार्क थे. दूसरा कौन सा आया? फोटो और नाम का इंडो ग्रीक्स. तीसरा है कुशंस. कुशंस ने क्या लेके आए? गोल्ड. दे वर कंटेम्पररी रोमन्स एंड पार्थियंस. ठीक है. फिर ट्राइबल लोग भी करते थे डील. बेस्ट एग्जांपल है यदुवेदास. ये यदुवेदा का कॉइन है. इज इट क्लियर और नॉट? ये जो नीचे वाला है ये यदुवेदा का है. कौन से उसमें था? कॉपर. A punch mark coin so named because symbols were punched or stamped on the metal surface. ये दिख रहा है? So they are punched. And ये किसके हैं आपके? Gold coins, Gupta period. Is it clear or not? Clear सबको? So yes, gold coins. Clear? The earliest issues are remarkable. The coins facilitated long distance transaction from which the kings. From 6th century onwards, the finds of gold coins finishes. ये बहुत important है. कहाँ से कहाँ तक coins चले? 600 BC से लेके कहाँ तक चले? 600 CE. 1200 साल तक coins चले. अच्छा, सिमिलरली अब आप करोगे इकोनॉमिक्स में करेंसी. करेंसी के एक्सचेंज रेट कैसे होता है? करेंसी के एक्सचेंज रेट का कैसे होता है? जो आपको पैसा दिखता है ना, उसका मतलब क्या है? कि मेरी इस करेंसी से मैं इतना गोल्ड खरीद सकता हूं. तो इन्होंने जो फ्रांस की करेंसी है फ्रैंक, उससे कंपेयर करके यूएस डॉलर बनाया. ऐसे कंपेयर करके उन्होंने बोला, मतलब कि जितने 1 रुपए की वैल्यू क्या है, जितने हमारे को 1 रुपए में कितना आएगा, कितना गोल्ड आएगा, उतनी वैल्यू. क्लियर और नॉट? दैट इज व्हाट वी से इन टर्म्स ऑफ इट. ऐसे गोल्ड करेंसीज और करेंसीज बनी. पहले क्या होता था? सारा गोल्ड होता था. सो अकॉर्डिंग टू दैट द कॉइंस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड. इज इट क्लियर और नॉट? ओके. अब क्या हुआ? 6th सेंचुरी में कॉइंस क्यों बंद हो गए? बिकॉज दो चीजें हैं. एक तो कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर. जब रोमन एम्पायर ही टूट गया तो ट्रेडिंग खत्म होगी. ट्रेडिंग खत्म होगी तो कैसे होएगा? इंडिया से कौन सी 3 मेजर आइटम्स आते हैं ट्रेड के लिए रोमन्स के पास? स्पाइसेस, टेक्सटाइल. 3 things that were going from India to the Roman Empire. That means the long distance trade declined and this affected the prosperity of the states. अब जब एक स्ट्रॉन्ग किंगडम नहीं रहेगा, इंडिया को कब तक सोने की चिड़िया बोला गया? जब तक मुगल्स थे. Whatever it may be, India was सोने की चिड़िया, और what we call it as a golden sparrow because इंडिया का ट्रेड ही बहुत था. अभी चाइना कंट्रोल्स 15% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड. 15% चाइना अभी कंट्रोल करता है. इंडिया जब गोल्डन वो एज था, इंडिया यूज्ड टू कंट्रोल 33% ट्रेड. अभी जो चाइना है उससे आप डबल सोच लो.
तो सब कुछ ही इंडिया से मैन्युफैक्चर होके जाता था. दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड इंडियाज गोल्डन पीरियड. और इतने गोल्डन पीरियड से कहाँ पहुंच गए फिर. अभी तो हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, बट लोग बहुत ज्यादा हैं, पर कैपिटा तो बहुत बुरा हालत है. बट दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड वी जनरेटेड. तो सारे के सारे कॉइन जितने भी आते थे, सारे कहाँ पे आते थे? इंडिया में. एवरी करेंसी वाज कमिंग इनटू इंडिया. अंग्रेजों ने देखा कि अच्छा हो सकता है, सब लूट के ले जाओ. सो दैट्स व्हाई वी डोंट हैव एनी रिमेन्स रिमेनिंग, बिकॉज वो हिस्ट्री ही डिस्ट्रॉय करके चलेगी. तो हमें यही नहीं पता लगा कौन से कॉइन है, कौन सा ये है. आर्कियोलॉजिकल सर्वेस वो करके, सब कुछ वो करके, जहाँ पे डिस्ट्रॉय करना था वो डिस्ट्रॉय करके चले. So we don't have any history, to be honest. They have destroyed majority of our history. Now back again, Roman Empire long day straight decline had benefited from it. Others argue that new towns and networks had started and emerging. इस करके क्या हुआ? जो countries थी, they became, जो India थी, it became self-sufficient. Is it clear? Two reasons हो सकते हैं. एक तो क्या हो गया? ट्रेड खत्म हो गया रोमन्स के साथ. दूसरा क्या हो गया? इंडिया क्या बन गई? सेल्फ सफिशिएंट. Any doubts with this or not? Okay, can I revise the coins again? सबसे पहले पंचमार्क कॉइन्स कौन लेके आया? सबसे पहले इंडिया में कौन से बने? फॉरेंस. इंडो ग्रीक्स क्या लेके आए? या तो वेदास के कौन से? कॉपर. कुशांस क्या लेके आए? सबसे बेस्ट गोल्ड कॉइन्स किसके थे? अब आता है ब्रह्मी स्क्रिप्ट. जो कल बात की थी, ब्रह्मी क्या से दो लैंग्वेजेस से बनी है. देवनागरी इससे बनी है, और कौन सी? बंगाली इससे बनी. अब ये जो मैं कल बताना भूल गया, वो आज ये यहाँ पे बताता हूँ. ये देखो, एक होता है लैंग्वेज, एक होता है स्क्रिप्ट. मैंने बोला इंग्लिश स्क्रिप्ट में मैं हिंदी लैंग्वेज लिख सकता हूँ. योर व्हाट्सएप लैंग्वेज. क्या कर रहे हो? अब कोई सपोज हमें इंग्लिश ना आती हो, हमें स्क्रिप्ट पहले सीखनी पड़ेगी. इसका मतलब क्या है? हाउ डू यू स्पेल और हाउ डू यू प्रोनाउंस इट. लैंग्वेज कौन सी में लिखी है? हिंदी. लैंग्वेज तो हिंदी है, इसका मीनिंग तो हिंदी में है. सो देयर इज अ स्क्रिप्ट एंड देयर इज अ लैंग्वेज. सो ब्रह्मी हैड इट्स वेरिएशन ऑल अक्रॉस इंडिया. जैसे हमने बोला, एक बंगाली फॉर्म में आ गई, एक ओडिया फॉर्म में आ गई, एक संस्कृत इस फॉर्म में आ गई, एक पाली फॉर्म में आ गई, एक प्राकृत फॉर्म में आ गई. स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्रह्मी. लैंग्वेज इज डिफरेंट. विद टाइम चेंज होता रहा अकॉर्डिंग टू द लोकलाइज्ड पीपल. क्लियर और नॉट? लैंग्वेज क्लियर है, स्क्रिप्ट क्लियर है, दोनों को, सबको. दो स्क्रिप्ट कौन सी थी अशोकन के टाइम पे? खरोस थी. ब्रह्मी किसने डिस्कवर की थी? जेम्स. इसका पाक भी है. सो अगर हम बात करें, क comes from this alphabet, च comes from this alphabet. दिस इज द ब्रह्मी स्क्रिप्ट. उससे क्या बन गई? देवनागरी एंड बंगाली. सबसे पहले तो हमें लग रहा था मोस्ट स्क्रिप्ट यूज्ड ड्यूरिंग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच स्क्रिप्ट? ब्रह्मी. इज इट क्लियर और नॉट? इसी से हमारा पंजाबी में ट बन जाता है, टैंका. इज इट क्लियर और नॉट? Every script has come from Brahmi, actually. If you look at it, script is all similar. They've all come from Brahmi. That's what he says. Most script used to write modern Indian languages have been derived from Brahmi. You will all associated these scripts with something or the other. The script most used in Ashokan inscriptions from the later 18th century, European scholars, aided by Indian pundits, worked backward from contemporary Bengali and Devanagari script used to write Hindi. उल्टा गए, देवनागरी से और बंगाली से वापस डिसाइफर क्या कर रहे थे? ब्रह्मी स्क्रिप्ट. उससे हमने ब्रह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर किया. अब ये प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी ब्रह्मी में? क. इज इट क्लियर? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगी? क. Comparing the letters of the older specimens, scholars who studied early inscriptions sometimes assumed they were in Sanskrit. Language कौन से में थे? Sanskrit, but it was wrong. Also, the earliest inscriptions were in fact in Prakrit.
लैंग्वेज कौन सी थी? प्राकृत. इज इट क्लियर और नॉट? सो कहीं पे संस्कृत है, कहीं पे प्राकृत है, कहीं पे पाली. स्क्रिप्ट कौन सी थी? ब्रह्मी. नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या चल रही है? अरबिक. या क्या चल रही है? खरोस्ती. इज इट क्लियर और नॉट? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज वेयर वी टेक अफगानिस्तान एंड दैट पोर्शन. क्लियर? उधर ये चल रही है. It was only after decades of painstaking investigation by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi. How Kharosthi was read, the story of the decipherment of Kharosthi. The script used in inscriptions in the northwest is different. Here we find coins of Indo-Greeks who ruled over the area. अब हमने कंपेयर कैसे किया खरोस्ती को? हमने देखा जो उनकी स्क्रिप्ट होती है, like the name of the king written in Greek and Kharosthi script, of course alphabet A से start होता है, उससे हमें पता लगा Apollodotus से पता लगा. So एक ये क्वेश्चन क्या आएगा? वन ऑफ द किंग्स कौन सा था? इज इट क्लियर? हमने ग्रीक स्क्रिप्ट तो आती थी, जो ग्रीस में यूज हो रही थी उसकी स्क्रिप्ट तो आती है, उसको कंपेयर किया इससे. सेम टाइम पीरियड, सेम किंग, सेम एवरीथिंग. सो फर्स्ट अल्फाबेट क्या बन गया? ए. सेकंड क्या बनेगा? पी. ऐसे हमें पता लगा उसको. क्लियर और नॉट? सो दैट्स हाउ वी वर एबल टू डू. इसमें कोई डाउट किसी को? खरोस्ती इंस्क्रिप्शंस इन विच लैंग्वेज? प्राकृत. इज इट क्लियर? मेजॉरिटी किसमें लिखा गया? प्राकृत, फिर संस्कृत, फिर पाली. लैंग्वेज 3 है, स्क्रिप्ट्स 2 हैं. कौन सी 2 स्क्रिप्ट्स है? ब्रह्मी एंड खरोस्ती. एनी डाउट्स विद दिस और नॉट? अगेन as I said, ये देखो, this is Indo-Greeks coin. ये क्या है आपका? फेस. सेकंड क्या है? ये आपके नेम लिखे गए like that. That's how we were able to compare. Clear or not? ये कौन सी स्क्रिप्ट है? खरोस्ती. To find out, epigraphists historians look at 2 Ashokan inscription more closely. Note the name of the ruler, Ashoka. अशोका को क्या बोला जाता है? 2 नाम है, पियादासी और देव पम्मी. पम्मी, पम्मी से याद रखना, मैं तो याद करने के लिए गया था. देवन पिया एंड दूसरा क्या है? पियादासी. देवन पिया का मतलब क्या है? बिलवेड ऑफ द गॉड्स. पियादासी क्या है? प्लेजेंट टू. व्हाट आर द 2 नेम्स गिवन टू अशोका? पियादासी, देव पम्मी. पम्मी, मैंने पम्मी याद किया है क्योंकि वहां पे ऑप्शंस तो आएंगे, पम्मी तो लिखा नहीं आएगा, बट ऑब्वियस. इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट आर द 2 थिंग्स दैट वी हैव? First is Piyadasi and the second is this one. He is somebody who used to call himself that. The name Ashoka is mentioned in some other inscriptions which also contain these titles. After examining all these inscriptions and finding that they match the terms of content, style, language, paleography, epigraphists have concluded they were issued by the same ruler. सब में क्या बोला है? धम्मा. तो इस करके हमें पता है किसने बोला है? अशोक. और नीचे पियादासी लिख दिया, कभी देव पम्मी लिख दिया, कभी अशोक लिख दिया. सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू कॉर्पोरेट कि एक ही आदमी ने बताया और सेम ही चीज लिखी गई. हिस्टोरियंस हैव टू कॉन्स्टेंटली असेसमेंट. ये सब करने की जरूरत नहीं है. मीनिंग प्लॉसिबल ये नहीं है. हिस्टोरियंस हैव टू मेक हिस्टोरियंस एंड किंग्स ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड इन दिस एंड दिस. ये भी करने की जरूरत नहीं है. ओके, जो मैंने आपको बताया था, अशोक वाज वेरी स्मार्ट. एज वी सी, it also interpreted as reflecting the anguish of the ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. How do we know it? The situation becomes more complex once we have moved beyond reading the inscriptions at a face value. While Ashokan inscriptions have been found in present day Odisha, which is which one? Kalinga. The one depicting his anguish is missing. Why is that? Of course, he doesn't want them to know that he has done something. He wants them to delete that chapter from this. Okay. Is everybody clear or not?